हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर इंग्लिश क्लास हियर एट लर्न करो। मैं हूं श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। अर्लियर हम ये पोएम इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। ऑलराइट, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको फ्यू लाइंस गिवन है फ्रॉम द पोएम और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सेम लाइन पे अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करे जा सकते हैं, जैसे कि ये 4 क्वेश्चन है और अभी हम सिमिलर लाइंस पे बेस्ड और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो लाइन्स हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of dreams and health and quiet breathing. So, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है 1 मार्क्स ईच इन ऑल 4 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एवरलास्टिंग जॉय। तो कैसे देती है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी gives us everlasting joy because its loveliness, जितनी वो ब्यूटीफुल है, एज द टाइम इंक्रीजेस उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है वो भी इंक्रीज करती जाती है विद द टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन इट्स लवलीनेस। So the effect of increase in its loveliness is that it gives a peaceful sleep. यानी कि when we see a thing of beauty, then what we have by it, we are having a peaceful sleep. यानी कि calm sleep without any stress. And when we sleep nicely and we take a good rest, then we get a good health. And further, we also have quiet breathing. यानी कि interrupted breathing नहीं होती है जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम या मिनिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर हैज द पोएट गिवन हियर इन दिस पर्टिकुलर लाइन। सो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर द पोएट हैज गिवन हियर इज अ क्वाइट बावर। क्वाइट बावर होता क्या है? क्वाइट बावर होता है अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। जब हॉट ह्यूमिड वेदर हो रहा होता है ड्यूरिंग समर, और तब हमें क्वाइट बावर यानी कि अंडर अ ट्री जब शेडी प्लेस बैठने को मिलता है तो हमें कितना काम लगता है, कितना कूल लगता है और कितना अच्छा लगता है। वी टेक रेस्ट देयर एंड फील लाइक वी कुड स्लीप देयर। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दीज लाइन्स ओनली आर, whose loveliness will keep on increasing? So, a thing of beauty. The loveliness of a thing of beauty keeps on increasing as the passage of time. Next question है आपका, identify the phrase which say that it is immortal. The phrase it will never pass into nothingness, यानी कि a thing of beauty will never go waste. As the time will go on, its beauty will keep on increasing day by day. It expresses the idea it, which is beauty, and it is immortal. Immortal का मतलब क्या होता है? Not ending. Next is what is bower? अभी मैंने आपको बताया, a bower is a pleasant shady place where we can sit and take rest and a restful sleep under a tree. Next question है, why do we need sweet dreams, health and quiet breathing in our lives? तो sweet dreams, health और क्वाइट ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है कि हम कितने काम हैं, कितने स्ट्रेस फ्री हैं और कितने हैप्पी हैं इन आवर ओन लाइफ। वी नीड स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग इन आवर लाइफ टू काउंटर द डिप्रेशन ब्रॉट ऑन बाय नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में नेगेटिव एलिमेंट्स को और ये जो है डिप्रेशन, इन टाइप की चीजों को बहुत ज्यादा जगह दे देते हैं, बट जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो इन सबको इरेडिकेट करने में हमारी हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस वी आर हैविंग ऑन सिमिलर लाइंस, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन अ जॉय फॉर एवर? अभी हमने डिस्कस करा, एज विद द टाइम, इंक्रीजिंग टाइम, इट्स ब्यूटी इज एवरलास्टिंग एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू सोर्सेज ऑफ जॉय which a thing of beauty provides to us. So, a thing of beauty gives us a quiet bower to rest peacefully and blissful sleep or the pleasant dreams. So, these are the two things. Next question है आपका, explain never pass into, explain
never pass into nothingness, यानी कि it will never be, यानी कि it will never go waste. So the joy that a thing of beauty gives is eternal. To the eternity means not having any end. It never ends. Instead, it only keeps on increasing with the time. Next question है, what is meant by bower? Bower refers to the peaceful place under a tree, shady area of a tree. So आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और अलग से दोबारा लाइंस गिवन है. आइए जानते हैं कौन सी लाइंस है. Therefore on every morrow we are reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all unhealthy and o'er darkened ways, made for our searching. अब इन लाइन्स के बेस्ड क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, what are the flowery bands that bind us to earth? So flowery bands here refer to the beautiful and the pleasant things, whatever are present in the nature, in the environment. And the memory of these things remains in our minds because when we see them, we feel happy and they get a place in our mind and help us strengthen our bond with earth. When we connect with them, then our bond with the earth is getting strong. Next question है, what message do the above lines convey? The above lines convey that life is full of hopelessness and sadness. तो ये hopelessness और sadness क्या है? ये दोनों evil elements है जिन्हें कि हम अपनी lives में काफी important जगह दे देते हैं unknowingly. And there is lack of noble souls on earth, ऐसा poem में बोला है by the poet John Keats. And noble feelings among the men कम हो गई हैं. In spite of all this, somehow some beautiful things help us to shed our sad and grime thoughts. लेकिन इन सब के साथ भी कुछ ब्यूटीफुल चीजें हैं जो कि हमारा जो ग्राइम है, डिस्पेयर है, ग्लूम है, उसको शेड ऑफ करने में हमारी बहुत हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is meant by spite in the above line? Spite का यूज हुआ है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? Spite here refers to the malice. It means that in spite of despair and gloom, a beautiful thing or a flowery band can make us happy. Alright? Malice here refers to the misery. Next question is, describe the evil and bad things that we possess in us. सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं और उसी को हमें यहाँ बताना है. We suffer from disappointments. हम डिसअपॉइंटमेंट जब फेस करते हैं उसको काफी ज्यादा जगह दे देते हैं rather than हम पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं. एंड लैक ऑफ नोबल वेज एंड नोबल क्वालिटीज. हम पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिव एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और उसकी वजह से सैडनेस को इंपॉर्टेंट जगह दे देते हैं इन आवर लाइफ. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आर हैविंग आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये 2 मार्क्स के हैं. First question है, mention 2 things of beauty that Keats refer in his poem. So you have to mention those 2 things. Further, how do they influence us? So the 2 things of beauty that Keats refers to in his poem are beauty in nature and beauty in literature. अब beauty in nature कहाँ है? By reading flowery bands connecting to earth. And beauty in literature कहाँ है? When we read about the stories of the people who have laid down their lives fighting for their motherland. तो ये लिटरेचर की बात आ गई और ये अर्थ की बात आ गई, नेचर की. Further, they influence us by helping us to overcome our sadness. तो जब हम think of beauty in nature या फिर in literary works देखते हैं, it brings us to a conclusion to overcome the sadness and the gloom. Besides enhancing our mood, they uplift our mood, and not only mood, they lift our soul too. Alright, next question है, how do beautiful things help us to live a happy life? तो beautiful things हमें happy life live करने में कैसे help करती है? We derive comfort and happiness when we look at beautiful things and the objects of beauty. The lasting impression they leave on our minds. When we have a glance of a beautiful thing, it is having a long lasting impression in our minds और वो हमें काफी टाइम तक याद रहती है और जब जब हम उसके बारे में रिमाइंड करते हैं then we feel happy and is a source of
permanent joy, क्योंकि जितनी बार हम याद करेंगे we are feeling happy again and again. They provide us relief from our everyday trials and tribulations and help us in living a happy life. Thus, a thing of beauty helps us to live a happy life. Next question है, how does a thing of beauty provide shelter and comfort? So poem में काफी clearly poet ने बताया है how these two things are provided. A thing of beauty provides shelter and comfort in many ways, not just one but many ways. It is like a bower where you can sit and take rest, and for a while you may sleep also, and a place under a shade of a tree where we can take rest, as I told you just now. It gives us a sleep full of sweet dreams, because when we sleep peacefully, then only we'll have sweet dreams. In the hot weather, the small stream of cool and clear water, जिसे कि rills से रेफर कर रहा है इन poems, तो कितना अच्छा लगता है ना ही सिर्फ human beings को but also animals when they are in forest and they sit near the rills, near the streams of cool clear water, and they feel very relaxed there, and the green of the forest around making it comfortable place for us to rest, not only human beings but animals and birds too. Next is, what is the endless fountain and what is its effect? So endless fountain क्या है और उसका effect क्या है? The endless fountain है क्या? It refers to the beauty of nature because it is immortal and it is everlasting. It is born from heaven itself, क्योंकि बोला है वो कहाँ से आ रहा है? From the edge of the from the side of the heaven. It's pouring onto us, and our life is full of miseries, but the infinite delight that we can get from the beautiful thing of nature give us motivation to continue our journey. Next set of questions which you are having are long answer type question, और ये 6 marks के हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में लिखते हैं. As first question है आपका, explain a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever ही आपके poem का title है by John Keats. So it is the first line of John Keats' first epic poem, The Endymion, and it is the first line of John Keats' first epic poem, Endymion, a poetic romance, and a poem, A Thing of Beauty, जो कि आपके syllabus में है. This line is dramatically very significant. Why? Because it is multi-layered in its meaning. इसका एक single meaning नहीं है, but it is having multi-layered, यानी कि many meanings in a single statement. It explains the effect of beauty on our soul, not only to eyes, not only to mind, but to our soul. Beauty heals the negative impulses of our life. हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी मिजरी होती है, जितनी भी सैडनेस होती है, a thing of beauty helps us in healing each and every negativity. Further, it relieves us from being weighed down by the worldly worries, because when we are so worried, we are so sad, in that particular situation we are having a glimpse of a thing of beauty, then we feel a bit relaxed. Further, Keats as a romantic poet brings out the belief in the power of nature. That's why reading the flowery bend वहाँ पे quoted है, to heal and give happiness. A beautiful thing is an object of joy because it gives us mental peace and makes us happy. Earlier हमने भी discuss करा है. Its values lies in its effect on us, and it never breeds a sense of nothingness. It never go wasteful anytime. Further, it will not diminish with the passage of time. Time never stops. It keeps on moving and it keep on moving, and in the similar way, जैसे जैसे time बढ़ता जाता है, a thing of beauty also keeps on increasing its loveliness. Second question है, explain an endless fountain of immortal drink. This line is taken from John Keats' poem A Thing of Beauty, that beauty is everlasting as it creates an eternal joy in the beholder. Beholder कौन होता है? Who is having that thing of beauty if it's an object. Further, it is an endless fountain of joy that is immortal as a drink is pouring onto us down from the heaven, and it is referred to as water of joy. Further, कहाँ से आ रहा है वो?
from the edge of heaven's cliff, जैसे कि last stanzas में mentioned by the poet, and the eternal joy is like a bliss of heaven on earth. Further, the poet here says that these words, in order to explain the nature of the pleasure and the joy that is created when a beautiful object is seen by us, यानी कि by the beholder who is having it, the poet here affirms the truth that the beauty is not ephemeral but eternal, यानी कि it is not going to end but it is eternal, it is not having any end. The pleasure we receive in perceiving a beautiful object is a gift that is worth treasuring, and as the joy removes the gloom in our mind and helps in rectifying sadness from our lives. That's how we have completed most important questions from this particular poem. Learn Karo Premium subscription say you can attend live classes anywhere, anytime. You can analyze your own performance as you get personalized students report. In case you find it boring to study all alone, then you will be enrolled along with the class and in a peer group. Then you also can attend the online as well as offline doubt clearing sessions along with the ongoing batches. Entire study material will be provided to you in PDF format. You can download our app Learn Karo, the live learning app, and you may also join us on Telegram. दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, do ask me in the comment section below, and I shall meet you in the next class. Till that time, stay safe, keep studying. All the best. Bye bye.